ओके, वेलकम एवरीवन टू एस्ट्रोलॉजी लाइट फॉर ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेसन नंबर 3 में। तो आज जो लग्नास हम कवर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं लिब्रा लगन से मीन लगन तक, और उनकी कुछ प्रिडिक्शंस देखेंगे कि कैसे हम लोग खाली लगन को देख के उनके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। So let me move to slide number 2. तो ये we already know this is the basic that we have 12 signs and we have 9 planets which are governing these 12 signs. तो इन सारे साइंस के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने मेंशन किए हुए हैं इस टेबल के ऊपर। और अगर आप इनको डेप्थ में समझना चाहते हो कि क्यों हमने ये एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, वी ऑलरेडी कवर इन द लेसन नंबर 2. So I request everyone to please watch our lesson number 2 for more clarity, and I will also put the lesson number 2 link in the description box also. So let me move to our slide. Okay. So today we will be talking about Libra Lagna. आज हम Libra लगन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इन हाउसेस में सारी राशियों को पुट कर रहा हूँ। So this is number 10, number 11, 12, 1, 2, number 3, number 4, number 5, number 6. ओके, सो इफ यू सी, हमारा असेंडेंट जो कि फर्स्ट हाउस होता है, अगर वहां पे आपका लिब्रा राइजिंग है, मतलब 7 नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में आती है, तो उसके लिए कुछ कॉमन प्रेडिक्शंस जो आर वेरी सीन इन द बिहेवियर ऑफ अ लिब्रा लगना। तो लेट्स से व्हाट इज लिब्रा लगना। पहले तो आप ये समझे कि लिब्रा लगन या जो लिब्रा साइन है वो कौन सा ओरिजिनल हाउस का बिलोंग करता है। दैट बिलोंग्स टू ओरिजिनल सेवेंथ हाउस। तो इनका जो मेन एरिया ऑफ फोकस ऑफ लाइफ है वो हमेशा मैरिज की तरफ ही रहता है। या तो इनको मैरिज से काफी गेन्स होते हैं या मैरिज से लॉस होते हैं। वो प्लस और पॉजिटिव और माइनस वो हमें पूरा पृथ्वी देख के पता चलेगा, बट देयर एरिया ऑफ फोकस इज ऑन मैरिज ओनली। वन थिंग वी ऑल्सो ऑब्जर्व फॉर लिब्रा लगना, इनका जो 4 नंबर का कर्क राशि है दैट इज कमिंग इनटू द 10th हाउस। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ 10th हाउस, राइट। तो अगर मैं 10th हाउस की बात करूं तो 10th हाउस हमारा एरिया ऑफ करियर को दिखाता है कि मेरा करियर कैसा होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा कैंसर साइन से, और कैंसर साइन ओरिजिनल कौन सा होता है, हमारा 4th हाउस होता है, राइट। तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर अपना घर से कोई भी काम करेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी स्नैपशॉट प्रोडिक्शन फॉर द लिब्रा लगना। अगर ये लोग कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं तो दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर होम ओनली एंड दे विल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। Okay, next we will cover the Leo Lagna. Now we see Leo Lagna is coming into the 11th house. Okay, so 11th house हमारा क्या होता है? 11th house is also the house of achievement, हमारे गेन्स को दिखाता है, right? और ये हमारे सोशल इंटरेक्शंस को भी गवर्न करता है। तो लेट्स से फॉर द लिब्रा लगना जिसका लियो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 11th हाउस, तो इसका प्रेडिक्शन ये बनेगा कि ऐसे व्यक्ति हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ढूंढेंगे जब भी अपना किसी ऑफिस पार्टी में या कहीं पे भी सोशल इंटरेक्शन करना चाहेंगे। तो इनकी ये इच्छा होती है बिकॉज 11th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डिजायर, करेक्ट। सो इनका एक डीप डिजायर होता है कि ये लोग किसी भी सोशल इंटरेक्शन में जाएं तो ये वहां पे अपना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह बिहेव करें और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। सो दिस इज वेरी कॉमन विच वी सीन इन दी लिब्रा ascendant people. Also coming to their second house में they have 8 नंबर राशि, right, which is Scorpio. So we have seen कि ऐसे लोगों में ना फैमिली को लेके काफी सीक्रेट्स होते हैं, राइट। सो दे हैव लॉट ऑफ सीक्रेट्स बिलोंग्स टू देयर फैमिली एंड दे हैव मेनी ट्रबल्स व्हेन इट कम्स टू द फैमिली। तो कई बारी ऐसा भी होता है कि फैमिली से इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव धोखा मिल सकता है, या इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है विच कैन नॉट बी फॉरगेटेबल। बिकॉज जहाँ पे भी आपका स्कॉर्पियो साइन आएगा आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो। So, there is something very secretive about their family life also. Okay. Okay, now coming to their seventh house. Their seventh house has 1 number, correct? 1 number belongs to the Aries sign. So, जहाँ पे भी आपका चार्ट में Aries साइन होगा, it will show your focus, correct? तो अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो इनका फोकस अगेन मैंने जैसे पहले बताया कि लिब्रा लगन है तो इनका फोकस हमेशा मैरिड लाइफ में ही रहता है, या अपने स्पाउस में ही इनका फोकस बना रहता है। अगेन यहाँ पे 1 नंबर है तो हम यहाँ से ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं बिकॉज
सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस। अभी यहाँ पे वन नंबर है तो वन नंबर बिलोंग्स टू मंगल। करेक्ट, मार्स है इसके स्वामी। तो देयर स्पाउस कैन बी डोमिनेटिंग एज वेल। उनके जो भी स्पाउस होंगे वो बहुत डोमिनेटिंग होंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेट्स जो हमारे एरीज के लिए आते हैं, अगेन उनका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। They are very good in sports also, right? So this is also one of the snapshot prediction for the Libra ascendant people. Okay, so let me cover the next ascendant, which is Scorpio. So right से अगर मैं कहूँ कि 8 नंबर की राशि मेरे फर्स्ट हाउस में है, so I'll put all the rashis in the houses first. Number one, number two, three, four, five, six, and सेवन। ओके, ऑलराइट। सो स्कॉर्पियो पीपल, जो स्कॉर्पियो पीपल में फर्स्ट हाउस में हमारा 8 नंबर आया है। अभी हम सब बेसिक जानते हैं कि जो 8 नंबर की राशि होती है, दे ओरिजिनली बिलोंग टू द एट्थ हाउस, राइट? तो ऐसे लोगों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इनके साथ कुछ भी बुरा करोगे तो ये भूलेंगे नहीं। So, this is also a very good, I would say, a trait of a Scorpio Lagna people because they do not forget anything. तो इनका memory बहुत अच्छा होता है. They have a very, very fine memory. Also, these guys are very secretive in nature. So, let's suppose, इनके मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान पाओगे. So, this is also, one of the secretive nature of a Scorpio Lagan people. And coming back to their second house, in their second house, we have seen 9 number Rashi is coming. So, they always used to listen to their father advice. Why I am saying father? Because ninth house belongs to the father, and second house is listening, is your communication. सो ऐसे व्यक्ति की जो मेजर कम्युनिकेशन है अपने फादर के साथ बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग अपने फादर की बात सुनते भी हैं बिकॉज इनका जो 9 नंबर विच गवर्न बाय फादर इज कमिंग इनटू द सेकंड हाउस। सो दिस इज अनदर स्नैपशॉट प्रेडिक्शन फॉर द स्कॉर्पियो लगना। Apart from that, we have also seen number two. Number two is coming into their seventh house. So number two, which is again, which area of part is governed by Taurus sign. Taurus governs the area of finance, money, bank balance, right? And it is coming into the seventh house now. So seventh house is the house of marriage. So when these people get married, automatically they have seen that their bank balance is going to be increase. तो ये एक बहुत अच्छी इनका एक प्रिडिक्शन निकल के आता है कि जब भी ये लोग मैरिज करेंगे ऑटोमेटिकली देयर बैंक बैलेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज फॉर श्योर। करेक्ट। And also we have seen the Scorpio sign. Scorpio sign is coming into their third house. So when I say third house belongs to our cousins, right? हमारे जितने भी younger sisters या younger brothers होते हैं, that are governed by the third house. Now we have seen that that Capricorn sign is coming into their third house. So third house क्या होता है? थर्ड हाउस हमारे यंगर सिस्टर्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं। और जब भी कैप्रिकॉन साइन थर्ड हाउस में आएगा, इट शोज कि इनके जितने भी यंगर ब्रदर सिस्टर्स होंगे उनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, या इनके नेबर्स भी होंगे उनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा। और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनके नेबर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। सो दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी स्पेशली फॉर द स्कॉर्पियो पीपल्स। करेक्ट। ओके, नाउ वी विल कवर अबाउट द वर्गो साइन। वर्गो साइन इज कमिंग इनटू देयर 11th हाउस। 11th हाउस जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये हमारे सोशल इंटरेक्शंस को गवर्न करता है। ऑफिस पार्टीज जितनी भी हमारी होती हैं, इट बिलोंग्स टू द 11th हाउस। तो ये लोग दीज गाइज आर वेरी कैलकुलेटिव व्हेन इट कम्स टू सोशल इंटरेक्शंस। तो ये लोग काफी सोच समझ के किसी से अपना सोशल इंटरेक्शन रखते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के साथ फायदा होगा कि नहीं होगा। सो दीज आर सम कॉमन ट्रेट्स अबाउट स्कॉर्पियो लगना। Also, we have seen number four, which is Cancer sign is coming into their ninth house again. So there is a high probability that father will give some property to this person also, because ninth house is the house of father and fourth number belongs to the property sign, or maybe you can say vehicles also. So, Scorpio people generally get a property from their father, and
Now coming to their Libra sign. So Libra sign is coming into the 12th house, correct? So 12th house governs all our losses and expenses, correct? जितने भी हमारे लॉस होते हैं, expenses होते हैं, donations होते हैं, that is also belongs to the 12th house. Now Libra sign is joining with the 12th house. So what is Libra sign? Libra sign is all about your spouse, right? Your business also, correct? So if these people will do any business with the foreign land, why I am saying foreign land? Because 12th house also governs the foreign land. So it will be very good for them. So inka, they can do very well in export and import also. And there is a high probability that their wife also has some relation with the 12th house. Maybe their wife is doing some job in a hospital, or maybe they belongs to medical industry, or some type of things where they need to keep the people happy. So why I'm saying happy? Because 12th house is also the house of happiness, correct? All right, so let me move to the next Lagna, which is Sagittarius, and number 9 would be in the first house, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So for the Sagittarius Lagna, first thing for the Sagittarius Lagna is 9 number is coming into their first house. Okay. So these people are, very philosophical in nature. When I say philosophical, it can be, they get a lot of knowledge. They can be very good in the धर्म शास्त्र, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये लोग प्रॉपर पंडित होते हैं. So पंडित is basically someone who has knowledge of everything. So these people have knowledge of everything, and also their area of focus is their father only. Why I am saying father? Because first house is my focus, and 9 number is coming into the first house. So their area of focus would be on the father only. And also we have seen number 10 is coming into their second house, correct? So number 10 is against status, right? So when it's coming into the second house, we have seen that their family must belongs to, it's very good in terms of status. They belongs to a good family where the status is very high, right? एंड अगर आप देखें इनके थर्ड हाउस में ना हमारा 11 नंबर का साइन आ रहा है, राइट? सो 11 नंबर का साइन है स्कॉर्पियो, इस एक्वेरियस साइन, जिसके स्वामी शनि है. लेकिन ये जहाँ पे भी 11 नंबर का साइन आता है ना, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कमी पैदा कर देता है. When I say kami, it can be a loss of anything, maybe a relation, right? Or maybe something belongs to it. So there is a high chance that कि जिसका भी Sagittarius sign होगा, they do not have any, younger brother or younger sister. छोटे भाई बहन नहीं होते. और मे बी देर इज अ हाई चांस बिकॉज थर्ड हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम द सेवेंथ हाउस, करेक्ट? तो ये थोड़ा सा मैं एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि सेवेंथ हाउस जो हमारा हाउस ऑफ स्पाउस होता है, वहां से नाइन्थ अगर मैं काउंट करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो थर्ड हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू योर फादर इन लॉ. तो यहाँ पे अगर एक्वेरियस साइन है तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि ऐसे लोगों के फादर इन लॉ नहीं होते. देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी. ओके. अगेन इट डिपेंड्स वेयर योर Saturn is placed, in which sign the Saturn is. We have many calculations to do, but this is something which is very basic prediction about the Sagittarius Lagna. Okay. And also now coming to the another part, their Virgo sign is coming into the 10th house, right? So 10th house is the area of career, right? जो हमारा करियर को बताता है, हमारे स्टेटस को बताता है. Now 6 number is coming into this. So when it comes to their career, they are very calculative. They can quickly calculate the profit and loss, that how much I will be getting if I do this business deal or not. So they are very, very smart people when it comes to the business perspective.
Also, Mercury is governing their seventh house, which is number three. Again, Mercury. So they are very good in business because Mercury is the natural, karka of the business. So for the Sagittarius Lagna, I would say these people should do a business a lot and they will get a lot of, success in the business. Also, if you see number six governs the rent. Okay, so जितने भी हमारे rental agreements होते हैं or I'd say mortgage होते हैं, so that is coming into their 10th house. So whenever these type of people do something on a on a mortgage or maybe on a rental, so they do a lot of benefit out of it. Why I'm saying so? Because number six, wherever the number six is, you have to pay. You have to regularly pay to that house. So अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई किराए पे अपना दुकान लेके कोई काम करेगा तो वो बहुत चलेगी वर्सेस वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद के कोई काम करे. Now the logic is clear because number six is coming into the 10th house. Okay, let's move to Capricorn ascendant. Number 12, 1, 2, 3, 9. ओके सो कैप्रिकॉन असेंडेंट. ओके अगर फर्स्ट हाउस में हमारा 10 नंबर आएगा तो दैट मींस यू हैव अ कैप्रिकॉन राइजिंग और कैप्रिकॉन असेंडेंट. आपका जो लगन है वो मकर है. Now the problem with 10 number ascendant is that their number 5 which belongs to your ego is coming into the 8th house. So there is a high chance that they face a lot of low esteem problem. मतलब बचपन से ही इनका जो confidence होता है वो काफी low होता है. Maybe they look very muscular in nature or maybe they have a fantastic body or something, but internally इनका जो confidence level होता है that is very low, so they have a issue of low esteem. Why I am saying so? Because number five is my ego. It is coming into the 8th house. So basically it creates a problem for them to get a good esteem or good confidence. So these guys have a high level of desire to get a good fame in the life. So they always have a lot of desire to get a good fame because they want to make sure the problem of low esteem should be covered. So this is, one of the prediction whenever you say a Capricorn Lagna, they have a problem of low esteem. Also, we have seen that number four is coming into their seventh house again, right? So there is a high probability that after marriage, these people will also get a प्रॉपर्टी. या तो हो सकता है कि इनकी स्पाउस कोई ना कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल इनको शादी में मिलता ही मिलता है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. अगेन द लॉजिक इज सेम. सेवेंथ हाउस इज मैरिज, नंबर फोर बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी. करेक्ट. नाउ कमिंग टू देयर फोर्थ हाउस वी हैव वन नंबर. So one number belongs to Mangal, right? It is a Aries sign. So we have seen that their mother is very strict to them. So basically their mother used to say, follow the basic routine, or maybe you have to study now, you have to play now. तो आपने देखा होगा कि मम्मी कई बार बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है. And there is a high chance that mummy will always keep on telling that this would be profit for you and this would be loss for you. Why I am saying profit and loss? Because number four is Cancer, which is governed by mother. It is coming into the seventh house. So mother keep on telling them what is profitable for you and what would be the loss for you. So this is, a little bit prediction about the Capricorn ascendant also, right? And now coming to our next ascendant, which is number 11. Okay, let's move to number 11 ascendant, which is Aquarius. So the Rashis I am putting now. The fifth house, number three, six, number four, five, six, seven, eight, nine, and number 10. Okay. So let's say in the ascendant, which is the first house, now 11 number is coming, right? So, in the last slide, I already told you कि जहाँ पे भी 11 नंबर की राशि होती है, it will signify some type of a loss belongs to that house.
तो इन लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम because in the first house Aquarius is coming the into their lagna. So this is the first thing. Also, we have seen now, number two is coming from in their fourth house, correct? So if those, people, अगर ये लोग कुछ भी अपना घर से कोई भी काम करेंगे तो उनको वहां से पैसा मिलेगा. Because number two राशि again belongs to my वेल्थ मनी, राइट? तो आप देखो जहां पे भी नंबर टू का राशि आएगा अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है तो दे कैन डू होम बिजनेस एज वेल. सो इफ दे डू एनीथिंग फ्रॉम द होम दे विल अर्न मनी. इट कैन बी more or it can be mega wealth. Again, we have to check where the Venus is placed in the chart. But yes, one thing is sure कि अगर ऐसे लोग कुछ भी अपना घर से करते हैं तो they will get a lot of money in their life. Okay. Now coming back to their married life, we have seen that number five is coming into their seventh house. Okay, so seventh house is again it denotes your spouse. So अगर लियो लगन का जब भी हमारा कनेक्शन सेवेंथ हाउस के साथ होगा, so it shows that कि spouse has lot of ego issues. Okay, तो ego issues बहुत होते हैं spouse के अंदर. That is again going to be trouble. And apart from that, we have seen that these people do a lot of good in terms of business also. Why I am saying business? Because their Libra sign is coming into the ninth house. So whenever these type of people do any business, they will see their bhagya uday will happen. तो इनका जो भाग्य उदय होगा वो बिजनेस से ही होगा बिकॉज सेवन नंबर इज कमिंग इनटू देयर नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस belongs to the house of luck. Also, we have seen that since seven number also belongs to marriage, तो ऐसे लोग जब भी अपनी मैरिज करते हैं तो भी इनका भाग्य उदय होता है. अब वो भाग्य उदय इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. सम पीपल आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि शादी के बाद हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई. वो अच्छी भी बदल सकती है, बुरी भी बदल सकती है. डिपेंड अपॉन द वीनस. अगर वीनस इज वेरी स्ट्रांग इन द नवमांशा विच इज अगेन गोइंग टू बी अ डिविजनल पार्ट, जो कि हम अपने आने वाले लेसन्स में कवर करेंगे. Then we have to see the strength of Venus, that how the Bhagyodaya will be happen for the Aquarius ascendant people. Also, we can say that since ninth house is the house of father and seven number is coming into the ninth house, correct? So seventh house is my business and ninth house also belongs to father. तो ये भी एक प्रेडिक्शन इनके लिए निकलता है कि इनके जो फादर हैं वो बिजनेस को ही बिलोंग करते हैं या वो बिजनेस करते होंगे. अब वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, वी हैव टू सी इनटू डेप्थ अगेन दैट वेयर द वीनस इज प्लेस एंड एवरीथिंग. Also, we have seen that 8 number is coming into their 10th house. Now, अगर स्कॉर्पियो साइन हमारा 10th हाउस से अगर कोई भी रिलेशन क्रिएट करेगा या सैटर्न के साथ रिलेशन क्रिएट करेगा, so there is a high probability that this person belongs to an IT sector, right? तो ऐसे लोग they are very good in computers, they are very good in mathematics or maybe in accounts also, because this 8 number is again part of Mars. It is governed by Mangal and also it is governed by Ketu. So Ketu shows your mathematics. So these, people are very good in Ketu, which is mathematics. And Mangal इनका 10th हाउस में स्वामी है, तो ये लोग ऐसे करियर चूज करें, मे बी गोइंग टू एन आर्मी बेस और मे बी आर एयर फोर्स और एनी नेवी. So especially navy I would say, because 8 number is also a water element and it is connected to your 10th house, so they will get a lot of success when they go into a navy, right? So this is also one of the prediction for Aquarius Lagna. Let's move to the Pisces Lagna now. Okay, for Pisces Lagna, let me put the Rashis first in the houses. This is number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Alright, so अगर आपका Pisces लगना है, especially first of all, number 12 is coming. So what is number 12? Number 12 is your original 12th house. Now it is coming into the first house. So ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत बेपरवाह से होते हैं. They are just like those people who are always enjoying their own company. So this is, very positive for the mean Lagna or the Pisces Lagna people. And we have also seen that fourth number is coming into their fifth house, right?
So when it comes to, romance or maybe, any type of relationship, these guys are very emotional because Cancer sign is coming into their fifth house, and fifth house क्या होता है हमारा romance होता है, right? And it is also the gain of the marriage because it is the 11th house from the seventh house, right? So there is also a high probability when these people get married, इनको कोई ना कोई they will get some property, and especially for girls I have seen if a mean lagna is for a female chart, we have seen that they get a property in their marriage also. Now coming back to their other houses, now number nine is coming into their 10th house. Okay, so number nine is again going to govern my philosophical nature. So these guys are very good when it comes to art side, right? So these are those professors who will teach you books related to the religion. So this type of attributes you can see for the mean lagna people also. Now coming back to their seventh house has number six. So number six जो होता है हमारा नेचुरली सर्विस को बिलोंग करता है. तो इसमें हाई चांसेस हो सकते हैं कि इनके जो भी स्पाउस होंगे वो सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते होंगे. और इन केस अगर वो सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं भी करते होंगे तो कोई ना कोई सर्विस बिजनेस को बिलोंग करते होंगे. दे कैन नॉट बी इनटू प्रोडक्शन लाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइन. Also, we have seen since it is a Pisces Lagna, we have seen number four. Number four is again going to be governed by Moon, which is coming into the fifth house. और fifth house belongs to our first child. Okay, तो जो भी आपका first child होगा, that is belong to the fifth house. Now, Moon is associated with the fifth house, so there is also a high probability that their first child would be a girl child. Okay. And when it comes to their wealth or the second house, so ये लोगों का number one राशि is there, right, which is Mangal. So number one राशि belongs to our focus area. So if these guys do, lot of focus, they can able to achieve mega wealth. This is a yoga for the mean lagna, right? So if any mean lagna people comes to you for the prediction, you can say if you have a good focus, you can create mega wealth, and also especially belongs to the industry which is again going to be Mangal Industries. So when I say Mangal Industry, it can be again, it can be Navy, it can be Air Force, it can be military. So these guys can, join those kinds of professions as well. And when it comes to the third house, it has number two. So you can see that their, younger brothers or maybe younger sisters have lot of money. Why I'm saying so? Because number two is associated with the third house, or probably their, neighbors have lot of money. Because third house also belongs to your neighbor, right? So number two is coming into the third house, which shows your money, that where the money is associated in your chart. And we have seen number 10, which is again going to be the part of your career, which is coming from the 11th house. So there is a high probability that their friends or their through their social interactions they will get a good career opportunities as well, because 11th house is all about social interactions and number 10 is coming into the 11th house. तो अगर ऐसे लोग अपने सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू कोई भी अचीवमेंट करना चाहें रिलेटेड टू देयर करियर, दे कैन डू सो. मतलब इनको बहुत हेल्प मिलती है अपने 11th हाउस से व्हेन इट कम्स टू द करियर पार्ट. So guys, that's all for today's lesson, and we will upload this video on YouTube and you can just watch this video. Let me know your feedback into the comment section and let me know what topic you would ask. You can share the topics with us and we will cover this into in our next lesson. Thank you so much. Bye bye.